Welcome to our new lecture series of metric space. In this lecture, we will discuss definition and example of metric spaces. If you remember, हमने रियल एनालिसिस में सीक्वेंस के कन्वर्जेंस की बात की थी, हमने लिमिट कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के कंसेप्ट की बात की थी. इन सभी में एक कॉमन थिंग है. लेट मी पॉइंट आउट दैट सपोज इफ आई टॉक अबाउट दी convergence of a sequence, then we know the definition. I'm talking about the epsilon definition. Okay, so what we say, if for all epsilon positive there exists some n naught such that we have that xn minus x is less than epsilon for all n greater than equals to n naught, right? Then we say this xn is converging to x. Of course this xn represent the sequence. Okay, now here we have this function. Let me also point out that this particular function. Okay, now we have also discussed the concept of limit, that is concept of लिमिट. कब हम बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है. ठीक है, सो वी से for all epsilon positive there exists some delta positive such that, suppose I'm talking about limit of sequence. We have already discussed this. Now I'm going to talk about limit of functions. Okay, so we have defined that f of x minus L is less than epsilon whenever we have that, suppose at some point xn, at some point x naught, that is less than delta. Okay, now here we have again this similar kind of function. Again we have this function, and we know this defines the distance between the pair of points. जैसे ये जो function है that defines the distance between x minus x naught. This defines the distance between fx and this L. Now we call this L as a limit of this function fx as x tends to x naught. Okay, or simply we write this 8, then we write limit x tends to x naught f of x is equals to L. Then we have the concept of continuity. Then we have third number, concept of continuity. It says for all epsilon positive there exists some delta positive such that we have f of x minus f of x naught is less than epsilon whenever we have x minus x naught is less than delta. Okay, and we write, then we say that fx is continuous at x naught. Okay, and we say fx is continuous at x equals to x naught, right? इन सभी में जो आपने एक बात नोटिस करनी है, दैट इज दिस फंक्शन. अगेन दिस डिफाइंस द डिस्टेंस बिटवीन fx and fx naught. Okay, and this defines the distance between x and x naught. Okay, now हमने रियल एनालिसिस में हमेशा इसी डिस्टेंस फंक्शन को यूज़ किया है, दैट डिफाइंस द डिस्टेंस बिटवीन two points in the real number system. Now we want to generalize this concept. Can we define the similar kind of idea that is some sense of distance? And again, okay, then we are able to define the concept of sequence, convergence of sequence, then concept of limit, concept of continuity. और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि क्या वो सारे कंसेप्ट जो हमने इस डिस्टेंस फंक्शन को यूज़ करके डिफाइन किए हैं,
नए डिस्टेंस फंक्शन की हेल्प से क्या हम इन्हें डिफाइन कर सकते हैं? द आंसर इज यस। और ये जो नए डिस्टेंस फंक्शन है वो ही हम मैट्रिक स्पेस में पढ़ने वाले हैं। सो यू कैन से दिस इज वन काइंड ऑफ डिस्टेंस फंक्शन इन मैट्रिक स्पेस जो कि अभी तक हमने रियल एनालिसिस में पढ़ा है। अब आप इसी डिस्टेंस फंक्शन को माइंड में रखी और उसी के बिहाफ पे वी आर गोइंग टू डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक एंड देन वी विल come to the definition of metric space. So we have this definition, and this definition going to be tell us about the metric space. Definition, and this defines metric space. So definition says a non-empty set, a non-empty set X with a map. सो बेसिकली जो मैट्रिक होता है या फिर जो डिस्टेंस फंक्शंस हैं वो एक मैप है। अ मैप किस तरीके से? अ मैप डी डिफाइंस फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर, दैट इज द सेट ऑफ रियल नंबर इज कॉल्ड अ metric space if the map D has the following properties. ओके, सो जब कोई भी फंक्शन डी कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा तब हम इसे मैट्रिक कहेंगे, और उस केस में एक्स के साथ जब हम इसका एक ऑर्डर्ड पेयर ले लेंगे तो उसको हम मैट्रिक स्पेस कहेंगे। ओके, सो दिस इफ ओके द मैप that follows these four properties. So first property is very crucial and that is again very much familiar, that हमें पता है हमेशा किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस नॉन नेगेटिव होती है, और सेम इज फॉलोड बाय दिस मैट्रिक डी, एंड दिस शुड बी ट्रू फॉर एनी एक्स एंड वाई इन कैपिटल एक्स। ओके, द सेकेंड प्रॉपर्टी सेज that if the distance between these two point d and x and y is equal to 0, हमें पता है किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कब जीरो होती है? if and only if and only if x is equals to y, अगर दोनों पॉइंट सेम ही हो तब ही उनके बीच की डिस्टेंस जीरो होती है, राइट? देखिए ये डिस्टेंस नहीं है, बट क्योंकि हमें डिस्टेंस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग कि ये डिस्टेंस हमेशा नॉन नेगेटिव होती है, इसलिए ये इस तरीके से एक रूल फॉलो कर रहा है, तो आप एक अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बना पाएंगे। ठीक है, स्टिल दिस डी इज डिस्टेंस, और मोर प्रिसाइजली हम इसको मैट्रिक बोलेंगे। ठीक है, नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज फॉलोड बाय दिस डी मैप इज, हमें पता है इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई और फ्रॉम एक्स टू वाई, दैट इज सेम एज द डिस्टेंस फ्रॉम वाई टू एक्स। okay, and that is also true for any x and y in uppercase x. This fourth property, that is nothing but the triangle inequality. So let me write this as, जब हम मैट्रिक की बात करेंगे तो इसको हम ट्राइंगल इनइक्वलिटी भी बोल सकते हैं, ट्राइंगल इनइक्वलिटी। okay, it says the distance between x and y, that is always less than equals to distance between x to z, and then distance from z to y, and that is also true for any x, y and z in uppercase x. Okay, so these are the four properties
ऑफ अ मैट्रिक डी, अगर कोई भी फंक्शन इन 4 प्रॉपर्टीज़ को फ़ॉलो करता है, तब हम उसे मैट्रिक बोलते हैं। और ये जिस भी स्पेस के ऊपर डिफ़ाइन है, जैसे यहाँ पर ये एक्स है, ये नॉन एम्प्टी सेट है, जिस भी नॉन एम्प्टी सेट पर ये डी डिफ़ाइन है और ये डी अगर मैट्रिक बन जाता है, तो उस केस में वी कॉल दिस एक्स अलोंग विद डी एज मैट्रिक स्पेस। ओके? So let me point out that the map D on the D on X cross X to R is called the metric on X. Okay, ये हो गया हमारे लिए मैट्रिक। और इफ वी राइट दिस एक्स कोमा डी, दिस ऑर्डर्ड पेयर, यहाँ पर नॉन एम्प्टी सेट है और यहाँ पर इस पर डिफाइन एक मैट्रिक है, तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर है दैट ऑर्डर्ड पेयर इज नॉन एज मैट्रिक स्पेस। सो एंड एक्स कोमा डी इज नॉन एज मैट्रिक स्पेस। ठीक है, कभी कभी जब अगर हमें इस डी के बारे में क्लैरिटी हो दैट व्हाट इज द मैट्रिक डी ऑन एक्स, देन इन प्लेस ऑफ एक्स कोमा डी वी यूजुअली राइट एक्स ओनली। ओके, अगर हमें डी के बारे में इंफॉर्मेशन है तो हम यहाँ पर इस डी को ओमिट कर सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं और वहाँ पर हम एक्स कोमा डी लिखने की बजाय वी ओनली राइट एक्स। Now, let me tell you some examples so that we can understand this particular definition. Before that, let me tell you an important definition, and that is the induced metric. So, let me write that also. Induced metric. Okay. Let x comma d is a metric space. The moment we say this is a metric space, that is ये x एक नॉन एम्प्टी सेट है और d इस x क्रॉस x टू r में डिफाइन एक डिस्टेंस फंक्शन है जो कि 4 प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। ठीक है, नाउ लेट कैपिटल Y इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ x। अगर इस x के लिए वी हैव अ नॉन एम्प्टी सबसेट y जिस पर अगर हम ये d डिफाइन कर सके, देन द restricted function dy that is defined from y cross y to r। अगर ये फंक्शन मैट्रिक डिफाइन करता है y के लिए, if restricted function dy that is defined from y cross y to r is a metric for y, क्योंकि ये x के लिए ऑलरेडी मैट्रिक्स है ही, तो ये y के लिए भी एक मैट्रिक डिफाइन करेगा। और उस केस में वी हैव दिस dy एज restricted function and more precisely this is the induced matrix by d on y। ठीक है, then the restricted function this is a metric on y and y comma dy is a metric subspace of x comma d। ठीक है, here this function dy which is restriction of d is known in the induced matrix and induced by the mapping d। Here dy is known as induced metric on y by metric d।
ठीक है. So this is about the induced matrix. Now we are coming to the examples. So example, this is our example 1.2.2 first. Okay, and it says the function d defined from r cross r to r defined by डी ऑफ, ये जो हम यूजुअल अभी तक पढ़ के आए डिस्टेंस वही फंक्शन है, एक्स माइनस वाई इज अ मैट्रिक ऑन आर. ठीक है, this r is the set of real number, and in that case r comma d will serve as a metric space. Now we will show that this function d is metric space. So let me write the solution for it. So हम जब भी किसी भी फंक्शन को मैट्रिक स्पेस के जैसे देखेंगे, सो वी मेक श्योर कि ये इन चार प्रॉपर्टीज को फॉलो करता हो. ठीक है, सो फर्स्ट वन इज अबाउट नॉन नेगेटिविटी. ओके, हमारा जो मेट्रिक है वॉट एवर द फंक्शन इज इट, इट हैज़ टू बी नॉन नेगेटिव. हमें पता है फॉर ऑल एक्स माइनस डी एक्स माइनस वाई मोड दिस इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव फंक्शन. ओके, सो वी नो दैट फॉर ऑल x comma y the distance between any two point is always non-negative. Okay, so we have that d x comma y is greater than equals to 0 for all x comma y in R. So this is the first property that is directly due to the distance between x minus x and y. ठीक है, then come to the second property which is about the coincideness. So we know that x minus y is equals to 0 if and only if x minus y is equals to 0, and that is if and only if x is equals to y. So we have that d of x comma y, this is nothing but a d x comma y that is equals to 0 if and only if x comma y x is equals to y, and that is true for all x and y in R. ठीक है, जब भी कोई भी दो नंबर इक्वल होंगे उसी केस में इनका डी एक्स कोमा वाई 0 बनेगा, एंड यहाँ पर डी एक्स कोमा वाई डायरेक्टली डिफाइंस द डिस्टेंस. थर्ड इज अबाउट, we know that the distance x minus y is same as the distance y minus x. Okay, and this implies that d this defines x comma y, and that defines d y comma x, and that is true for all x comma y belongs to R. तो आपने देखा कि अगर हम इस मॉडुलस फंक्शन की बात करें तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ तो डायरेक्टली ही हमारे नॉलेज में है ही. नाउ वी नीड टू थिंक अबाउट द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑलवेज. ओके, दैट इज़ द क्रूशियल प्रॉपर्टी. वी नो इफ वी चूज एनी थ्री points from the set of real number, then we have this scenario. So for x comma y comma z in R, we have that the distance between x minus y that is equals to distance between x minus z plus z minus y, right? And that is equals to, you can write this as x minus z plus, you can write this as z minus y. Okay, and using the triangle inequality you can write this is less than equals to distance between x and y, x and z, and plus z minus y. Now from the definition, this is nothing but the dx comma z, and this is nothing but the dz comma y. Now in place of x minus y, if we write d x comma y, then this has to be less than equals to d x comma z plus d z comma y.
Okay, so this is the fourth property, that is the triangle inequality. Okay, so ये जो d function है that follows these four properties and hence this d function is metric on R. और अगर ये R पर एक metric है तो set of real number is a metric space along with this metric d, that is defined as d of x comma y is equal to distance in the set of real number, or you can say on real line defined as modulus of x minus y. So this is about the example number 1.